Hello everyone. Today we are going to solve question number 7 of class 9 Maths of NCERT book, that is Polynomials chapter 2 exercise 2.5 question number 7 1. Dear friends, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का मैथ्स NCERT बुक से Polynomials chapter 2 exercise 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 का 1. ये क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 इज इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटीज का मदद से हमें ये सॉल्व करना है. ठीक है, ये हम थोड़ा सा व्हाइट कलर, राइट. क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. क्वेश्चन नंबर 1 में 99 टू द पावर 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द गिवन? 99 to the power 3. 99 Evaluate the following using suitable identities. क्वेश्चन है 99 to the power 3. इसे हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं. Erase this one, right? Let us write once again. Dear friends, क्वेश्चन है evaluate the following using suitable identities. नंबर 1 में है 99 टू द पावर 3. क्या है? 99 टू द पावर 3. इसे हम आइडेंटिटी लगाना है. कौन सा आइडेंटिटी हम यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे a माइनस b होल क्यूब. ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे. इसका आइडेंटिटी क्या है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. ये हमारा आइडेंटिटी है. यहाँ पर हम ये 99 टू द पावर 3 इसे हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर 3, राइट. यहाँ पर हम a ले सकते हैं 100 और b ले सकते हैं 1. तो a माइनस बी होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. ये कितना है? 100. तो a क्यूब यानी कि 100 टू द पावर क्यूब, राइट. माइनस b क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू a is 100 इंटू b is 1 इंटू 100 माइनस 1, राइट. अभी हम करेंगे 100 टू द पावर 3, दैट मीन्स 1 एंड 0 इज 1 2 3 4 5 6 6 0. This is 100 into 100 into 100, right? Minus 1 minus 1 1 to the power cube means 1 minus 1 into 300 is 300 into 100 minus 1, right. Now you see the question is 1. How many 0? 6 0. 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 3 on 3. And how many zeros? 1 2 3 4 1 2 3 4. Minus into minus is plus. 300 into 1, that is 300, right. Now you will add this number with this number, right. That means 1 0 0 0 3 0 0, right. Minus this is
30,000 and 30,001. Therefore, if we add this one, we'll get 30,001. 30,001. Right? Now we'll subtract this one. Now I am going to subtract 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0 minus 30,001. 30,001. 0, 0, 1. अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 है तो 9, 9, 2, 0 यहाँ पर 3 है तो 7, 9. Therefore, the answer will be 9, 7, 0, 2, 9, 9. This is my answer. Right? हम फिर से एक बार देखते हैं 99 टू द पावर क्यूब. हमको ये आइडेंटिटी यूज करना है तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. a कितना है 100 और b कितना है 1. तो हम 100 माइनस 1 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 टू द पावर होल क्यूब, दैट इज 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3a इंटू b, 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1. 100 to the power cube means 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Minus 1 to the power cube means 1, minus 3 into 100, that is 300. And this is 100 minus 1, right? Therefore, we are getting 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, minus 1, minus 300 into 100, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 0. Minus into minus is plus 300. Therefore, we are adding this number with this number, that is 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, minus. This is 30,000 and minus 30,000 minus 1, that is minus 30,001. If we subtract this one, we are getting this value, that is 970299. Right? This is the answer. Dear friends, if you like this video, please subscribe, like and share. Thank you everybody for watching this video.